Hello students. So today we are starting with a new thing in biology. आपके लिए आपकी नीट में हेल्प करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ले आई हूँ. That is the MCQs of the most important books that we use in biology for helping us with the NEET. So for now, ये book कौन सी है? This is Truman. Okay, and इसका latest edition that is 2025 का edition is what we are using. आपको जो भी MCQ में डाउट है from the chapter child, हर एक एमसीक्यू ये बुक में प्रेजेंट है. ओके, एंड उसी एमसीक्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. हो सकता है एक आध दो रिपीट भी हो जाए, बट आई डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चंस. दैट इज व्हाई वी बी डूइंग ईच एंड एवरी टुगेदर. ओके, सो वी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन द सेम. इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन नंबर्स मेंशन्ड है दैट ये वीडियो में कौन से क्वेश्चंस है और दूसरे वीडियो में कौन से हैं. So you can literally go to the video and actually check out the question. Okay, so let's start together with living world. First question, which of the following promotes diversity among the living things? अगर living things हैं तो उनमें कौन सी चीजें डिफरेंट होती है, डाइवर्सिटी क्या क्या है उनमें, तो इनमें से कौन सी चीज उनको डिफरेंशिएट कर सकती है. सो क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस एंड होम्योस्टैसिस में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चीजों में डाइवर्सिटी बता सकते हैं कि ये इससे डिफरेंट है, डाइवर्स है, दैट इज नथिंग बट natural selection that can promote diversity. I hope you remember Darwin's theory. Next one, which of the following promotes similarity among living things? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा ऑपोजिट है कि पहले हम देख रहे थे कि डिफरेंस दैट इज डाइवर्सिटी क्या है, अब हम देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी क्या चीज प्रमोट कर सकती है. तो हमारे पास सेम ऑप्शंस ही हैं यहाँ पे, लेकिन सिमिलैरिटीज प्रमोट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टू ऑर्गेनिजम्स टू इनहेरिट द जीन्स फ्रॉम अ वेरी कॉमन सिस्टम. उनके जो जीन्स है वो दोनों ऑर्गेनिजम्स में आए हैं, तो वो चीज सिमिलैरिटी बन सकती है. So next one, regulation of organization occurs through. You have to organize organisms in the given areas, right? This is this or this is that. तो ये किस तरह से हो सकता है? तो इसमें बहुत सारी चीजें लगती है. तो इंफॉर्मेशन, एग्रीगेशन, एंट्रोपी, ये सारी चीजों में हम जब सबको क्लब कर ले, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ करें, फिर उनको क्लासिफाई करें, उनको सेटल करें, ये सारी चीजें जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज एग्रीगेशन, इंटरैक्शन, इक्विलिब्रियम एंड चेंज. ये सारी चीजों को जब हम अपने सामने रखेंगे, आप आराम से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, गिवन आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स. हम लिविंग बींग्स से नॉन लिविंग को डिफाइन कैसे करें, डिफरेंशिएट कैसे करें. See, we have a lot of things that is growth and reproduction and all of that, but we know that these two, even after seeing them in living beings, are not enough to clearly differentiate between living and non-living. That has to be a non-negotiable thing. दोनों चीजों में कोई भी डिफरेंस ना रहे, वैसी प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, या फिर ऐसा जिसको आप कभी भी चेक ना कर पाओ कि ये चीज तो लिविंग बींग्स में होती है लेकिन कुछ लिविंग बींग्स में नहीं होती, वैसी चीज हमें ढूंढनी है. तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स, consciousness is also one of the things, and we have none of the above, so that's not the answer. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 both. ओके, इनके केस में अगर कोई और भी ऑप्शंस होते, जैसे मैं कहूँ मेटाबॉलिज्म, वन इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, दूसरा हो गया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर हो गया कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस की जगह वो आपको रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई भी दे सकते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूज. व्हाट डज दिस मीन? ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमेशा तक नहीं जीने वाला है, लेकिन फिर भी लाइफ कंटिन्यू रहती है. ये सिर्फ किसके बाद पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज ऑफ reproduction, that is continuation of species. That's the whole point. So death has nothing to do with the continuation of life. This is not that meaning. Though older die, yet new are produced due to reproduction. So this is the most correct explanation of the given statement. नेक्स्ट पे चलते हैं, करेक्ट हायरार्की ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे वो सिर्फ आपको किंगडम टू जीनस या वो वाली हायरार्की नहीं बता रहे हैं. लेट्स स्टडी व्हाट इज गिवन. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर.
ये करेक्ट है, लेकिन वी वांट अ लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड, सो लेट्स सी इफ वी हैव मोर ऑर्गेनाइज्ड वंस. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ये दोनों यहाँ तक सेम है. ऑर्गन्स यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है. इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, दिस सीम्स मोर करेक्ट बिकॉज इसमें ऑर्गन्स का नाम मेंशन है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ये भी टिश्यू, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल तक करेक्ट है, मतलब सिमिलर है. पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर. Population, an extra word, it makes more sense. Let's see the next one. Atoms, molecules, cell, tissue, organs, individuals, population तक same है. यहाँ पे word community ऐड किया है, फिर ecosystem and biosphere. Last की मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है because सारे हैं उनमें ecosystem and biosphere mention है. So according to this, most correct क्या हो जाता है? It is option D, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन से organs, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, सारे वर्ड्स ही ऐड किए हैं. सो इट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, नो. मूवमेंट, नो. ग्रोथ, नो, बिकॉज ये सारी नेगोशिएबल है. ऐसा भी हो सकता है कि कोई लिविंग थिंग ये ना कर रहे हो, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो नॉन नेगोशिएबल है? दैट इज प्रोटोप्लाज्म. I hope you know what that is. Okay, let's continue. Most important feature of all the living systems from the viewpoint of their continuity in the capacity. Okay, continuity somewhere is relating to reproduction. Utilize solar energy for metabolic activities for all living things. तो ये तो हो नहीं सकता because हम solar energy use नहीं करते, वो तो सिर्फ plants करते हैं. Producing gametes can be, but it's not necessary that everybody does that, right? Replicate the genetic information, utilize oxygen to generate energy. This also can't be always true because we also have anaerobes, right? So replication of genetic information seems the most correct one. Next one. Most of animals at present obtain their free energy from. तो एनिमल्स ऑब्टेन कैसे करते हैं एनर्जी? आई होप आप जानते हो कि रेस्पिरेशन का चैप्टर कैसे चलता है. We take in the oxygen and we use it to break down certain chemicals. Now, what are these chemicals? These are complex organic chemicals. So, reduction of organic molecules, oxidation of organic molecules, light through photosynthesis and electricity in coal. Most two is oxidation of organic molecules. Oxidation से उसको आप break करोगे and उससे energy release हो जाएगी. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटेटोरियल अडेप्टेशन? अच्छा, पहले तो काफी वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो इट कैन बी स्ट्रेसफुल. नेटेटोरियल का मतलब होता है द अडेप्टेशन टू स्विम. ठीक है, तो नेटेटोरियल अडेप्टेशन मतलब वो चीज करने के लिए बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इजी हो जाता है. सो प्रेजेंस ऑफ अडेसिव डिस्क, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी. फेदर्स के साथ इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. Strong shoulders or streamlined body. Streamlined body is the most correct one because it doesn't really oppose the pressure given by or the force given by water. Okay, so streamlined body that we usually see in aquatic organisms like fishes is very useful for a natatorial adaptation. Next one, which is connected with the temporary adaptation. Temporarily वो चीज होती है बॉडी में. फाइटोमेलानिन, मेलानिन, टैनिन एंड एंथोसायनिन. हम देख सकते हैं ये when you go a lot in the sun and you see these things happen in the body, nothing but melanin being formed. After some time it however can be reduced. Let's go to the 12th one. An example of long-term adaptation is. Now, ये कोई temporary नहीं होने वाला. This is a long-term thing. Hibernation, melanism, estivation, and spines on cactus. ये long-term adaptation का mostly meaning यही है that it is going to be forever because it is not really going to change its geographical area, if possible. Okay. So, which one is going to be? It is going to be the spines on cactus, which is the long-term adaptation. Volant adaptation is for. Okay, so firstly, volant adaptation का मतलब क्या होता है? Meaning तो इसमें दिया ही है, लेकिन आप आंसर टिक करूंगी तो देख लेना. That is flying. Volant means to fly. So ये adaptation help करती है उड़ने में.
नेक्स्ट वन, वी आर जस्ट सीइंग द अडेप्टेशंस ओवर हियर और मैच द कॉलम करनी है। अगर आपने मेरे पीवाईक्यूज देखे हैं तो आप जानते हो कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें बायो में एमसीक्यूज बहुत ही अलग अलग टाइप से दिए होते हैं और मेनली उसमें मैच द कॉलम्स दी होती है। मतलब मैच द कॉलम्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, ए और बी है, उनको मैच करना है, फिर यहाँ पे आंसर चेक करना है, बट मेन पार्ट इज मैच द कॉलम होती ही है। और मैच द कॉलम कैसे हम ट्राई करें, अगर मुझे एक आध आंसर सपोज नहीं आता है तो फिर भी मुझे उसमें से एस करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, उसकी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ठीक है, सो फर्स्टली मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉलम ए और कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है मेरे पास। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि मुझे लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन का आंसर नहीं आता। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, शुड आई रियली लीव दिस क्वेश्चन, we will see what to do, but let's at least go for the questions जो मुझे आते हैं। So closed system, now from these set of questions what I feel is the closed system is universe। okay, तो मैंने B का ऑप्शन 1 बता दिया आपको एंड आई एम वेरी सर्टेन ऑफ द फैक्ट कि B तो करेक्ट ही है। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि B के लिए ऑप्शन 1 कितने हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हमें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, होमोथर्मल विच इज मैन, विच मीन्स हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर की कंडीशन से बार बार चेंज नहीं होता है। ठीक है, so is it matching 3 with C with 4? No, it's not matching. Then dead cells belong to the cork. Okay, D with 3. All right, and the next one, a long term adaptation. Long term adaptation is seen in a man. चलते हैं नेक्स्ट पर। नाउ यहाँ पे मैच द कॉलम है। अगर आपने मेरे पीवाईक्यूज देखे हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि मोस्टली बायो में मैच द कॉलम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ये हमारे लिए इजी भी है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। अनदर थिंग, मैच द कॉलम में आपको सारे टॉपिक्स आना जरूरी नहीं है, फिर भी आपको करेक्ट आंसर मिल सकता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मैं ये भी दिखाऊंगी आपको कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो कैसे करना है उसको। ओके, तो लेट्स गो फॉर दिस। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस दिए हैं, कॉलम 1 एंड 2। सपोज लेट्स अज्यूम कि मुझे फर्स्ट ऑप्शन नहीं आता है, दैट इज लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। इसमें से किसके लिए है आई डू नॉट नो। फिर लेट्स गो कि मुझे कौन से आते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है क्लोज्ड सिस्टम इज सीन इन द यूनिवर्स। तो आई एम सर्टन ऑफ द फैक्ट कि बी का ऑप्शन तो 1 ही है। तो यहाँ पे आई हैव टू चेक कि बी और 1 के लिए कितने ऑप्शंस दिए। ये नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी नहीं है और ये भी हो सकता है। राइट, बी और डी में मेरे पास ऑप्शंस आ सकते हैं। अब इसमें आई हैव टू सी कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। देखो ए तो है ही लेकिन मुझे ए नहीं आता। फिर सी ऑप्शन भी जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे आंसर 4 दिया है और यहाँ पे आंसर 2 दिया है। इससे ये भी पता चलता है कि सी का ऑप्शन 3 तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको हिंट्स कैसे आनी चाहिए। अब लेट्स सी, सी का ऑप्शन क्या है, होमियोथर्मल विच मीन वार्म ब्लडेड। तो ये तो मैन होता है, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, तो सी का ऑप्शन 2 है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं रहा और मेरा आंसर क्या हो गया, डी। तो सिर्फ दो आंसर देखने से मुझे पता चल गया कि मेरे एमसीक्यू का आंसर क्या होने वाला है। स्टिल लेट्स सी व्हाट इज देयर अहेड। डेड सेल्स आर ऑलवेज फाउंड इन अ कॉर्क। आपने देखा होगा अगर आपकी केमिस्ट्री लैब में आप गए हो तो वहां पे सारी ग्लास बॉटल्स का जो स्टॉपर होता है दैट इज मेड अप ऑफ वुड, दैट इज कॉर्क। ठीक है, वो डेड सेल्स है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन इज सीन इन अ डक दैट डज स्विमिंग। वो स्विमिंग करता है, ये उसकी लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। आई होप आप अभी जान गए हो कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। और भी कोई डिफिकल्टीज है तो कमेंट्स में बताओ, वी विल बी क्लियरिंग देम फॉर यू।
नेक्स्ट वन पे चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट दैट दे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो शेयर नहीं करते, कुछ फीचर्स, तो वो कौन से फीचर्स हैं? अ फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑब्वियसली दे आर ऑल फॉर्म्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैन प्रिपेयर फूड, कैन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड? नो, सो दैट is one thing that they do not share. Respiration, reproduce, ये सारी जो चीजें हैं, ये फीचर्स हैं, वो उनमें फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सब सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, वेरी वेरी इजी, आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इट इज फाउंड इन प्रोटोजोआन्स। ओके, सो आई होप आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट वन पर। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन, तो इनमें से आई होप आपको याद है, हमने स्टार्टिंग में ही ऐसा एक क्वेश्चन किया था जहां पे हम एटम से लेके बायोस्फीयर तक कंटिन्यू कर रहे थे। अब आपको अगर पता है तो उसमें लास्ट वन कौन सा था? दैट वाज नथिंग बट बायोस्फीयर। सो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देख सकते हैं हम? बायोस्फीयर में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, इनफैक्ट एजिंग को ही हम क्या कहते हैं? प्लांट्स में ये वर्ड बहुत यूज होता है, इट इज कॉल्ड एज सेनेसेंस। ओके, नेक्स्ट वन, a fish thrives better in aquarium if green plants are growing in it. This is because they can eat plants for their survival. No, because once they deplete, what will they do then? They can't thrive, right? They like green surroundings. This is not the answer. They get more oxygen. They inhale carbon dioxide released by the plants. No, the answer is they get more oxygen. Obviously, the plants are present. They're going to take the carbon dioxide and give out. Next, which of the following parasites is non-living outside the cell of a living organism and becomes living on entering it? एक्चुअल में ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है वायरस की। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मोडियम, नन ऑफ दीज, इसमें से वायरस कोई नहीं है, राइट? नो, बैक्टीरियोफेज is nothing but a virus that infects bacteria. So our answer is tricky. नेक्स्ट पे चलते हैं। होम्योस्टैसिस इज व्हाट? तो विदाउट रीडिंग तो ऑप्शंस पहले ये देख लेते हैं, होम्योस्टैसिस क्या होता है? नॉर्मल बॉडी की कंडीशंस जो मेंटेन करनी है, कि कोई भी चेंज बॉडी के अंदर की सिस्टम्स में नहीं होने देना है, टू रेजिस्ट दैट, ये कहते हैं होम्योस्टैसिस। So a tendency to change with change in environment, this is not homeostasis. Tendency to resist internal changes, this is homeostasis. Disturbance in regulatory controls is not homeostasis. Plant and animal extracts used in homeopathy is not that. Okay. Next one, which of the following cells in plants show totipotency? What is totipotency? एक जो सेल है वो सेल डिवाइड होके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेल्स में जब बन सकता है, इसको हम कहेंगे टोटीपोटेंसी। सो दैट इन प्लांट्स इज सीन इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आई होप यू नो दैट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल्स रेगुलेट देयर एक्टिविटी थ्रू, सो सेल्स अपनी एक्टिविटीज कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? फर्स्टली उनको एनर्जी चाहिए, उनको और क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली मटेरियल चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब उनके पास चली जाएगी तो वो क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी एंड बोथ। सो दोनों चीजें चाहिए, नॉट जस्ट वन। तो ये दोनों चीजें जब उसे मिले, दे कैन रेगुलेट द एक्टिविटी। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टैसिस? तो हमने अभी पढ़ा है होम्योस्टैसिस क्या है, तो देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज हार्ट बीट एट रनिंग, ये दोनों वैसे होम्योस्टैसिस है। स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये क्या होता है? इससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसलिए स्वेटिंग होती है। एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, तो ये सारे ही होम्योस्टैसिस के एग्जांपल है। तो ऑल ऑफ द अबव इज आवर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अडेप्टेशन शोन बाय बर्ड्स आर, अब बर्ड्स को मेनली अडेप्टेशन क्यों जरूरी है? फर्स्टली बिकॉज वो एयर में है तो वो रेसिस्टेंस भी होता है एयर का, उसको ओवरकम करना है। दूसरी चीज, उनका वेट जो है वो कम होना चाहिए जिसकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सके, राइट? सो ये सारी चीजें हैं। शेप ऑफ बीक्स, वो शेप ऑफ बीक कितना स्लेंडर है, वो ऐसा होता है, राइट? तो व्हाई इज दैट? सो दैट वो फ्लो अपोज कर सके। टाइप ऑफ क्लॉज एंड न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स आर बेसिकली होलो बोन्स जिसकी वजह से द वेट इज लेस।
modification of forelimbs into wings, obviously that is for flying. So all of these are the adaptations shown by birds. Okay, वैसे कौन से adaptations है हमने अभी पढ़ा, these are volant adaptations, याद रखना. Next one, adaptation significant for the evolution of species and reason of diversity are. First thing, ये कैसे टाइप के adaptation हो सकते हैं? Short term and heritable. ये short term तो definitely नहीं हो सकते. Long term and heritable, long term and non heritable, short term and non heritable. So obviously इसमें से हमारे दो options तो निकल चुके हैं, that is short term adaptations तो possible नहीं है. Then you might be confused कि लॉन्ग टर्म एंड हेरिटेबल होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म एंड नॉन हेरिटेबल. तो इसमें ऑप्शन फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अडेप्टेशन सिग्निफिकेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड रीजन ऑफ डाइवर्सिटी आर. ओके, सो द आंसर इज लॉन्ग टर्म एंड हेरिटेबल. आई होप यू सीन दैट. ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पर. हेट्रोफाइली इज अ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन इन लीव्स ऑफ. अच्छा, हेट्रोफाइली का मतलब क्या होता है बच्चों? हेट्रोफाइली इज व्हेन यू हैव डिफरेंट टाइप्स और शेप्स ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट. ओके, सो ये चीज हमें किस में देखने में मिल सकती है? हाइड्रोफाइट्स फॉर, यस डेफिनेटली हाइड्रोफाइट्स में होती है, लेकिन नॉट रियली फ्री फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड. दिस इज मेनली सीन इन रूटेड एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. Kangaroo shows long-term adaptation by using its tail as. Okay, it's really the most easy MCQ you would have ever seen. आपको भी पता है, ठीक है? So kangaroo basically uses its tail as the fifth limb. Okay, and that is how it is seen as an adaptation. Next one, a wheat crop is ripening in the field. This shows. ये wheat crop ripe हो रहा है, तो ripe कैसे हो रहा है? Because it is getting the sun and it is also having stored energy which is being transferred for it to ripe. So this thing is showing transfer of energy. Next one, a long-term adaptation of having both dissected and undissected leaves occur in an aquatic plant which is. Okay, ये सारे examples हैं. वैसे कुछ examples आपके NCERT में नहीं भी है, but हमें थोड़ा extra पढ़ना पड़ेगा. So the answer is limnophylla. Okay, please remember this important MCQ है, याद रखना. नेक्स्ट पे चलते हैं. A closed system is that which. आपने ये शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि closed systems and open systems क्या होती है. However, closed system वो होती है जिसमें change तो नहीं, exports energy. No, it doesn't export energy. Does not exchange materials with environment is a closed system. कोई exchange of materials नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट वन पे चलते हैं. What represents the steady state? State of that organism is steady. कोई भी change नहीं है. So what is that? Intake of food, material, oxygen and water could be. Elimination of waste is also a part of it. Intake of materials and elimination of waste, both of them clubbed together is a steady state. Next one. Which is correct about energy transfer, energy transformation in living cells? एनर्जी ट्रांसफर करना और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना. ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर और फ्रॉम वन थिंग टू द अदर. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में होना. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. both occur continuously, both occur discontinuously. First energy transfer and then energy transformation. First the transformation and the transfer. Basically both are occurring continuously. Okay, so this is the correct answer. Next पे चलते हैं. Thanatology is the science that deals with. ये शायद आप ना जानते हो. Again, start marking it because it is important. It is the science that deals with death in all its aspects. Next पे चलते हैं. Animals which do not have a steady body temperature. Okay, so इनको हम cold blooded भी कहते हैं. ये कैसे होते हैं? इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के सिस्टम के हिसाब से चलता है. दे कैन चेंज दैट. ओके, सो ये पोइकिलोथर्म्स है. इसका एग्जांपल इज फिशेस, याद रखना. नेक्स्ट वन, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस. वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म.
ओके, इसका ऑपोजिट होगा एनाबॉलिज्म, एंड दोनों को क्लब करें तो बन जाएगा मेटाबॉलिज्म। एंड होम्योस्टेसिस तो आप जानते ही हो। मोस्ट ऑफ द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स have a tendency to change with the change in environment, tendency to resist internal change, disturbance, plants, animals, etc. I think ये repeat हुआ है, right? So what is the answer? Tendency to resist the internal change. Next one, homeostasis refers to positive and negative feedback. Positive feedback, negative. There is no feedback. No, there is a feedback which is positive and negative feedback mechanism से काम करता है. Next, the total heat content or potential energy of a system is called. ये भी आपको chemistry में आया होगा. It is called as enthalpy. Right? Please remember that. Next, the first Indian awarded World Food Prize in 1987. Very easy answer. M.S. Swaminathan. Okay. Next one. यहाँ पर भी सॉरी हमारे पास मैच द कॉलम आई है. मैं जैसे आपको कह रही थी, इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं. ठीक है. वैसे मैलाकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलस्क्स. ओके, सो ए विथ एस वाला ऑप्शन 1 है हमारे पास, एंड 2 ए एंड सी में से कोई एक हो सकता है. डी के लिए सेम ऑप्शन दिया है, सो वी विल नॉट सी दैट एज ऑफ नाउ. सी में 2 डिफरेंट ऑप्शन है. लाइक सी माइकोलॉजी is the study of fungi, so option is Q. C के साथ Q, so my answer is option C. Okay, easy. However, let's see. Pomology is the study of fruits and ornithology is the study of birds. Okay, so आपको आंसर मिल चुका है. It is option C. Let's go for the next one. Choose the correct matching regarding an institution and its location. Let's see all of them. Pune, Kasauli, Mumbai, Lucknow. ओके, वैसे बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे वायरस का मेंशन है, तो ये बहुत रेयर ऑप्शंस है. फर्स्ट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे. दैट्स द मोस्ट करेक्ट. Next one, scientist Norman Borlaug, a plant breeder, won the Nobel Prize in the field of peace for. बहुत ही famous नाम है Norman Borlaug का. That was for Green Revolution. Okay. Next one, molecular biology is concerned with the study of. Okay, molecular biology basically किससे डील करता है? तो हमारे बॉडी में जो यू कैन से कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, वो सब में क्या चेंजेस हो रहे हैं. मेनली बायोमोलिक्यूल्स जो है, इनमें जो चेंजेस होते हैं, इनके पॉलीमर्स जो होते हैं, जो यू कैन से बिगर यूनिट्स है, जिनको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, बन रही है, वो सारी चीजें. ठीक है. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉलीमर्स ऑफ लाइफ सीम्स द मोस्ट करेक्ट. All aspects of microbes, no. Chemical behavior of organisms, no, because we are talking about chemicals, okay, not the organism's behavior. Process by which molecules organize into primitive forms of life, no. So that is A, the correct answer. Bioinformatics is concerned with the application of. अब ये बहुत ही easy हो जाता है. हम जैसे ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग टेक्निक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है. Information science related in analyzing biological data. Bioinformatics, option D. Okay, ये आपको लिटरली इंफॉर्मेशन को किस तरीके से फीड करनी है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे फिल्टर करनी है, ये सब सिखाता है. Next one, programmed cell death is scientifically termed as it is apoptosis. Okay, ये क्यों होती है? So it's not a bad thing. Okay, it is something which gives your body a characteristic shape for particular things to happen or for particular functions to happen. For example, मैं हर टाइम ये एग्जाम्पल बच्चों को देती हूँ कि ये जो फिंगर्स हैं, ये जो वेब्स बने हैं फिंगर्स के बीच में, अगर ये वेब्स नहीं होते तो फिंगर्स यहाँ ऐसे ही जॉइंट हो जाती, तो इसका फंक्शन नहीं हो पाता. नाउ ये जो है यहाँ के सेल्स, दे सीज्ड टू ग्रो. सीज्ड टू ग्रो का मतलब क्या है? क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, वो लिविंग सेल्स जरूर है, लेकिन वो सेल डिविजन नहीं करेंगे. और करेंगे तो आप जब नहाओगे तब थोड़े थोड़े सेल्स खाली हो जाएंगे, रिप्लेस बाय न्यू वंस. बट यहाँ पे प्रोग्रेसिव ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको. दिस इज द रीजन व्हाई मेरे जो फिंगर्स हैं, मेरा जो हैंड है, उसको ये पर्टिकुलर फंक्शन हो पाता है. So that is why programmed cell deaths happen, which is known as apoptosis. Next one, the living organisms can be exceptionally distinguished from the non-living things on the basis of exceptionally, मतलब definite capability होनी चाहिए
reproduction is not the answer, growth and movement is not the answer, responsiveness to touch हर एक में जरूरी नहीं है होना, so interaction with the environment and progressive evolution is the correct answer. नेक्स्ट वन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑब्वियसली कटरीना से लेके स्पेस तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है. किंगडम टू स्पीशीज में बेसिक कौन सा है? इसमें स्पीशीज इज द बेसिक. नेक्स्ट पे चलते हैं. फ्रेमवर्क सिस्टम टू क्लासिफाई in which various taxonomic categories are arranged in the logical order, which means kingdom से लेके system तक जो हम ये logical order follow करते हैं, what is this sequence called? It is known as a hierarchy. Even आपके family में hierarchies follow हो रही है, जैसे आप हैं, आपके suppose father हैं, उनके father हैं, फिर उनके father है, जो आपके great grandfather हो गए, तो ये क्या है? ये एक hierarchy होती है. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. recent branch of taxonomy is, जो अभी अभी ऐड हुई है, is nothing but karyotaxonomy, that is the study of nucleus और उसके chromosomes की बात हो रही है. तो चलिए आगे चल रहे हैं for question number 51. Scala naturae, that is the ladder of nature as it translates, was first theory in biology in which all things were placed in a hierarchy and it was given by. ओके ये आपके जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं दिया है, बट अगेन this question being extra is very important, so always remember it was given by Aristotle. Okay, let's go to the next question. Reason of diversity in living beings is, so there are a lot of things or a lot of reasons which support why diversity is occurring, लेकिन main reasons क्या हो सकते हैं? Mutation could be one of the reasons, लेकिन हमें main reason की बात करनी है, which is the most suitable. Long term evolutionary changes, short term evolutionary changes and gradual changes. Now ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एवोल्यूशन है ना बहुत क्विकली नहीं होता है, एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है. एंड आप जो उसका टाइम पीरियड देखोगे, उसमें फर्स्ट एंड लास्ट स्पीशीज देखोगे, जो टाइम पीरियड में आप चेक कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ एवोल्यूशन हो चुका है. ओके, so here it is going to be option B, that is long term evolutionary changes. Next one, the practical purpose of classification of living organisms is to, तो उनका मेन पर्पस क्या है? फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन द ओरिजिन, ट्रेस द एवोल्यूशन एंड नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सी नेमिंग इज नॉट मेकिंग सेंस, उसका वो पर्पस नहीं है. ये पर्पस क्या है? पहली बात मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगी इस क्लासिफिकेशन का एग्जांपल. व्हाट डज दिस मीन? कि अगर मुझे कोई ऑर्गेनिज्म आपने ला के दिया है, आई हैव टू चेक व्हाट इज, यू नो, आई हैव टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई इट. सो मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकती हूँ? आई कैन ओनली आइडेंटिफाई इट इफ आई हैव समथिंग इन द पिक्चर व्हिच मैचेस विद दिस और इज अराउंड अबाउट दैट, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि मैं अननोन चीजों के लिए मुझे फैसिलिटी मिल जाएगी कि मैं उन चीजों को नेमिंग कर सकूं और उनको आइडेंटिफाई कर सकूं. In early times, which types of plants were classified? So early times में plants को classify कैसे किया जाता था? Main thing है कि वो मुझे किस चीज में help कर रहे हैं. तो plants का main help पहले होता था in a medical way, कि वो मुझे किसी भी चीज में जो जड़ी बूटी है और हम नाम देते हैं, that is all because they are helping us for curing something, right? तो उसमें आंसर क्या होना चाहिए? It should be medicinal. Next one, the term taxonomy was coined by, the name is A.P. de Candolle, so that is given over here. हाँ, A.P. de Candolle नाम है, याद रखना है आपको. Next one, the term taxonomy in general refers to, so taxonomy का मतलब क्या है? See, it's like an umbrella. उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. तो आप आइडेंटिफाई करोगे, नेमिंग करोगे, क्लासिफाई करोगे, वो सारी चीजें उसमें आती हैं. तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये तीनों करेक्ट है. सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वन, who was first to classify plants and also wrote maximum on plants? Now यहाँ पे जो हम 51 से मेनली देख रहे हैं, सारे नेमिंग बहुत ज्यादा है. तो आप एक काम कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो ऑफ दीज थिंग्स एंड साइंटिस्ट के नेम मेंशन कर सकते हो. सी, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड ट्रूमैन इज ऑल अबाउट दैट, राइट? इट्स अ लिटिल एक्स्ट्रा. So the one who wrote maximum on plant is Theophrastus. Let's go ahead. The basic or smallest unit of classification, I guess this is a repeated one. It is nothing but species. Okay. Next one,
Linnaeus recognized how many plants in his book Species Planetarium? The very significant amount is 5900 species. Okay, so 5900 plant species जो है वो उन्होंने recognize की थी in his book Species Planetarium. Next one. Taxonomy without phylogeny may be linked to bones without flesh is a statement given by Parkin and it was supported by whom? Okay, so यहाँ पे they are telling you that the importance of phylogeny is as much as taxonomy. अब taxonomy आप जानते हो classification, identification and naming करता है. लेकिन what is phylogeny? तो मैं इसमें थोड़ा आपको समझाऊंगी. Phylogeny is linking to organisms. उनमें phylogenetic relationships ढूंढना कि ये इससे linked कैसे हैं, क्या इनके कोई ancestors similar थे या इनमें analogical कोई differences है या similarities है, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है. That was very cleverly given by Parkin and it was supported by Tajikton. Okay, going to the next one. Term species division and phylum were coined by. Okay, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको सारे आ रहे हो, but ये नाम आप याद रखो तो बहुत जरूरी है. Firstly, the name species was given by John Ray. Okay, तो यहाँ पे देख लेते हैं. रे का तो मेंशन यहाँ पे दोनों में है, species by Ray. This is wrong. Species by John Ray. Here, species and division by Ray है. Division was not given by John Ray, so we have two options. Second thing, जो division name है, it was given by Eichler. Okay, Eichler and Prandtl इसको हम mention भी करते हैं chapter में काफी बारी, तो आपको याद रहना चाहिए. So option here is Eichler and here we do not have it. It's given Haeckel. So this also is wrong. The answer is A. And phylum was given by Cuvier. Okay. Please remember this very important question. Let's go to the next one. Total species living today are dash of those living in the past. ये question actually आ चुका है and that is 1/10. जो past में रहती थी उसमें से total अभी हमारे पास सिर्फ 1/10 species है. Next one. Choose the correct sequence of taxonomic hierarchies. लेकिन इसमें किसकी hierarchy है? Linnaean hierarchy की बात हो रही है, तो इसमें एक आध दो words यहाँ वहाँ होंगे वो आपको पता होना चाहिए. Phylum, class, family, tribe doesn't enter over here. Family के बाद तो correct है, लेकिन we still need more. Then we have division, class, order, family, tribe, genus and species. Here we have order. जो यहाँ पे mention नहीं था. और अगर हम यहाँ पे देखें, Katrina plays cricket on family ground space. So class and family के बीच में order is important. However, let's go to the next one. Order, class, tribe, division. ये तो उल्टा जा रहा है. So this won't be possible. Phylum, class, tribe, order. Okay, they mentioned tribe over here, which is not possible. Okay, so our option is B. Tribe comes after family in case you add it. But Linnaean hierarchy में. So answer is B. Next one. Taxon is. What exactly is a taxon? तो वो एक hierarchy है. Actually taxon को हम ऐसे define करते हैं कि वो एक taxonomic category है. Taxon is a taxonomic category. तो यहाँ पे आपको जहां पर भी short term for taxonomy, no, they are two different things. Okay, so this is incorrect. A group of species, it's not necessary. A group of species तो फिर genus आना चाहिए, right? Then classification, classificatory taxonomic unit of any rank. Any rank means आप kingdom से लेके species तक जा रहे हो तो हर एक चीज भी taxon हुई, वो कोई भी rank हो जाए उसको आप mention नहीं करोगे first or second or third, they are all taxon. So this seems more correct. However, a compendium of international rules of nomenclature, no, this is incorrect. So our option is C. Next one, then what is a category? Okay, here you might be confused. So let's see, a rank in hierarchy, any group of living objects, no. Categories हम specifically किस में mention करते हैं? वो जो hierarchy है उसी के बारे में mention करते हैं. Term used interchangeable with taxon, no. If that would be the case तो हमें ये MCQ नहीं आया होता. A taxonomic grouping, no. This is any rank or a rank in the hierarchy that we have. Next one, intermediate category is. Okay, now ये काफी बच्चों को पता नहीं है. ये actually आपके बुक में इतना ज्यादा मेंशन नहीं किया है, but it is very understandable. तो पहले होता है kingdom. Okay,
उसके बाद होता है phylum, then you have class, order, family, etc. Okay, now I'm not writing it further, but sometimes ऐसा हो सकता है that we might require for certain organisms. For example, यहाँ पे class है तो सब क्लास, काफी बारी सुपर क्लास भी होता है। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज दैट्स वेयर दे विल बी मेंशन, राइट। फाइलम होता है तो उसके बाद सब फाइलम भी हो सकता है। ओके, सो ये जो है, ये जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, दीज आर ऑल इंटरमीडिएट कैटेगरीज। डिड यू अंडरस्टैंड? तो वो क्या पूछ रहे हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होती है, मतलब ये जो हमने ब्लू में लिखे हैं वो क्या होते हैं। सो कैटेगरी इन एडिशन टू ऑब्लिगेट कैटेगरी, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, एनीथिंग विच इज कंपल्सरी उसको ऑब्लिगेट कहते हैं, ठीक है। So this is the most correct one. But let's see the other ones. Subphylum, यहाँ पे subphylum का mention है तो वैसे तो ये भी correct है। Subspecies, species आगे हालांकि मैंने यहाँ mention नहीं किया पर उसमें भी हो सकता है, so that is also correct. So because these three are correct, all the above are correct. So our option will be D. कभी कभी हम ये mistake कर जाते हैं कि एक ही option देके correct कर लेते हैं, दूसरे ऑप्शंस चेक नहीं करते हैं, ऑल ऑफ द अबव या फिर ए एंड बी बोथ, ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो डू ऑलवेज लुक एट ऑल द ऑप्शंस, हाउएवर you know confident you are, but you have to look at them. Okay, so this is what the answer is, D. Next one, taxon and category differ in. Okay, so both of them, how are they going to be different? Because हमने already उनके MCQs देख लिए हैं. Taxon is recognized and assigned while category is abstract. This is very true. Category is an abstract concept. Okay, taxon is a group of real organisms, whereas category is just a rank. ओके, बट कैटेगरी, आप किसी लायन को कैटेगरी नहीं बोल सकते, या फिर आप सोलिनेसिए को कैटेगरी नहीं बोल सकते, आप क्या बोल सकते हो कि फैमिली इज अ कैटेगरी, ठीक है। टाइगर और एल्गे इज टेक्सॉन एंड स्पीशीज और डिवीजन इज अ कैटेगरी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो ये तीनों करेक्ट है। अगेन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। The number of obligate categories which are always used in a taxonomic hierarchy are. Okay, अब ये भी obligate categories का नाम आया है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग क्या है वो देखते हैं। हमें वो टेक्सोनोमिक हायरार्की को पहले यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज दैट? कैटरीना प्लेस क्रिकेट ऑन फैमिली ग्राउंड स्पेस। कैन यू प्लीज काउंट देम? हाउ मेनी आर देयर? 3 plus 4, these are 7. That's exactly what they are asking, obligate categories. अच्छा मैम, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑब्लिगेट कैटेगरी है या नहीं? तो ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जिससे वी आर गोइंग टू जस्ट फर्स्ट काउंट कि कौन से मेन कैटेगरीज है इसमें, विच मीन्स यहाँ पे सब फाइलम, या फिर सुपर क्लास या फिर सब स्पीशीज, ऐसा कुछ तो नहीं है, वो एडिशन है, राइट। लेकिन जो एग्जैक्टली होने ही चाहिए वो कितने हैं हमारे पास? 7। तो यहाँ पे द आंसर इज 7। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको लग सकता है कि ये सारे वर्ड सुने हैं, फैमिली है, टेक्सॉन है, स्पीशीज है, बट कोहॉर्ट समवॉट सीम्स अनहर्ड, but still the reason is the one which is odd one is taxon over here, because these are all the categories that we are mentioning. Okay, cohort is one of the categories, usko order ke sath bhi kiya jata hai. Next one, which taxonomic category contains organisms belonging to the same class but not to the same family? Again, हम यहाँ पे लिखेंगे Katrina plays cricket on family ground space. Makes it very easy. Count भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। So क्या mention किया उन्होंने? Category contains organisms belonging to the same class. मतलब same class में belong करते हैं but not to the same family. So what is that? The answer is order. Option C. So I hope आपको पता है how are we doing this, and अगर आपको कोई भी doubts है तो आप please mention करें and do not forget to comment. तो चलते हैं next question पर।
two genetically related species having distant non-overlapping geographical areas are. ये genetically related जरूर है लेकिन overlap नहीं हो रहे हैं इनके geographical areas. तो ये इनमें से कौन सी कह रहा है कि biological, obviously biological species तो है ही, taxonomic नहीं, sympatric will be synchronized, which means जब overlapping areas होंगे, यहाँ पे non overlapping है, तो these are allopatric species. Next one, two species having same overlapping geographical areas. इस केस में क्या आएगा बेटा? It will be sympatric species. Okay. Next one, what are mule, tigon, liger, and hinny? Okay, if you've seen the movie recently, कुछ नाम आया था किसी मूवी का, इसमें लाइगर लिखा हुआ था and it was mentioned in the caption कि it's a crossbreed, right? So ये names आप देख सकते हो, दो organisms के नाम से mix किए हैं. Mule तो is not mixed, however it is a crossbreed of a donkey and a horse. Then here tigon, that is tiger and lion. Liger is lion and tiger, but then in a different way, which means genders reverse kiye hai. So these are nothing but hybrids. Okay. Next one. When the generic name is repeated in specific name of a plant, it is called as. So I hope you know that generic name and specific name जब repeat होते हैं, इनको nothing but tautonyms कहते हैं. Okay. Next, in binomial nomenclature proposed by Linnaeus, every organism has. Now, जैसे Linnaeus ने बताया था, हर एक organism में कौन से दो चीजें होनी चाहिए, जैसे हमारा एक name and surname होता है, वैसे इनके पास भी क्या होना चाहिए? Generic and specific name. So two names, one in Latin and other is a common name. Incorrect. Two names, correct है. One scientific and other vernacular. Incorrect. One scientific name given by two scientists. No. One scientific or biological name with two words, a genus and a species. D is the correct option. Next one, binomial epithet in binomial nomenclature is. Okay. So binomial epithet in this case क्या होता है, जिसमें हम साइंटिस्ट का भी नाम इंक्लूड करें, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ पे आपने मेंशन किया है साइंटिस्ट का नाम, so it should be genus, species plus author name. That is option C. Next, the third name in trinomial nomenclature is, okay, did you know that binomial nomenclature is the one we use now, but पहले naming के बहुत सारे ways थे. तो वैसे trinomial nomenclature भी था, उसके मैं कुछ examples दूंगी आपको. One is a very funny name though. हमारे पास जो गोरिल्ला का नाम है, so it was gorilla, gorilla and gorilla. It's funny, but it is true that all the three names for gorilla are same. Okay, so ये जैसे हम अभी बता रहे हैं genus, species, so this used to be subspecies name. Okay, so यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, third name, that is this, वो क्या होता है, that is nothing but subspecies name. Okay, दूसरा भी एक नाम है corvus, corvus splendens, splendens. दिस इज नथिंग बट द इंडियन हाउस क्रो. ठीक है, इसका भी जो ये नाम है, तो ये कौन सा होगा? कॉर्वस इज जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज. हाउएवर नाउ व्हाट डू? वी यूज ओनली दिस पार्ट. ओके, so I hope you know what is the third name in a trinomial nomenclature. It is the name of the subspecies. Continuing ahead, the founder of taxonomy is Aristotle, the father of modern taxonomy, who wrote Species Planetarium. Very easy. Okay, who and provided a basis for classification of plants is nothing but Linnaeus. Okay, next one, Linnaeus is famous for coining the term systematics, no. Introducing binomial nomenclature, yes. Giving natural system of classification, no. So obviously all of this is not the answer. Next one, duplicate of holotype from same collection of same locality, date and same branch of plant is called. Okay, do you know what the holotype is? When the scientist is producing this particular species for nomenclature and giving it out, you know, when they are using it, that is known as a holotype. But when you show the duplicate of it, similarity है दोनों में, तो word क्या आना चाहिए? I'm giving you a hint, it should be iso. So the name is isotype because they are going to be similar, they are going to be duplicate.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी। ना आप भी जानते हो कि ये जो वर्ड्स है, मेकिंग इट वेरी इजी फॉर यू, किंगडम से लेके स्पीशीज तक, ये सारे जो वर्ड्स है, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑल कैटेगरीज। ओके, सो हियर यहाँ पे ऑर्डर, क्लास एंड जीनस है, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर ऑल कैटेगरीज। Next one, an animal with same generic, specific and subspecific name is. I just gave you an example. It is the gorilla. Next, in a scientific name, the name of the author is printed in. Actually, we do not know this much, but the answer is Roman. The name is printed in Roman language. The term animal species was coined and defined by. इसका आंसर हमने पहले दे दिया है. Who is that? That is nothing but John Ray. Next one, if a biologist is to nomenclate a similar species, he will study what? Obviously, हमने अभी बात की थी duplicate और similar जो भी species है, उसको हम क्या study करेंगे? उसका isotype study करेंगे. नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ नियोटाइप? तो नियोटाइप क्या होता है? जहां पे ओरिजिनल चीज, मटेरियल जो होता है ओरिजिनल, वो मिसिंग है. ठीक है, नॉमेनक्लेचर टाइप फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, दिस इज नॉट प्रेजेंट. नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग, yes. One of the two or more specimens cited by the author, one of the two or more specimens cited by the author, no. So our answer is option D. The genetic species concept was given by dash. So the genetic species concept was given by Lord C. Okay. So I hope आपको याद रह रहा है हम जो पढ़ रहे हैं. Going ahead for the next question. Which set of species names belongs to the same genus? So let's check. You have Histolytica and coli, Gingivalis and Proteus, Proteus and coli, Vivax and coli. Also, when you want to be very sure of what could the answer be, want to guess that, so आप ये चीज चेक कर सकते हो कि काफी ऑप्शंस में वो चीजें दी जाती है. जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोलाई वर्ड बहुत सारी बार रिपीट हुआ है, तो मैं सोच सकती हूँ कि शायद आंसर हो. वैसे द आंसर ऑफ दीज इज ऑप्शन ए, हिस्टोलिटिका एंड कोलाई, बिकॉज इनका सिमिलर जीनस वर्ड है एंड अमीबा. एंड अमीबा कोलाई और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट. नेक्स्ट वन, ट्रू स्पीशीज आर. ओके, जो ट्रू स्पीशीज होती है वो इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, बट नो. ट्रू स्पीशीज को हम क्या करते हैं? वी ट्राई आइसोलेटिंग देम, बट बाय व्हाट मीन्स? फ्रॉम व्हाट? देन दैट इज sharing the niche or feeding the same food. We do reproductive isolation so that we can stop that process. Next one, breeding is possible between two members of the same dash, two members of the same genus. Very easy one. Next, Nicotiana is, again, इसका आंसर क्या है? Nicotiana is a genus. It's not a species name, variety name or anything. Sequence of which of the following is used to know the phylogeny? Phylogeny मतलब आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, where it was mentioned कि फ्लैश और बोन्स का जिस तरीके का तालमेल है वैसा ही टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी का है. तो फाइलोजेनी इज नथिंग बट यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द ऑर्गेनिज्म विद द अदर और इट्स एंसेस्टर्स. ओके, सो वो चीज स्टडी करने के लिए आपको उनके डीएनए सीक्वेंसेस स्टडी करने पड़ेंगे. So the answer is option D. Next one, in which book binomial nomenclature was issued by Linnaeus? So this book's name has been repeated in this entire set of MCQs. That is nothing but Systema Naturae. Next, phonetic classification is based on. Okay, ये शायद थोड़ा सा different word है आपके लिए. Dendrograms based on DNA characteristics is the incorrect one. Then sexual characteristic is also not the basis. The ancestral lineage of existing organism is also not correct. The answer is observed characteristic of existing organism. The phonetic classification is also used when you are doing statistical analysis. So option is D. Next one, statistical methods used in classification. मैंने अभी आपको बताया कि एक part उसका phonetic होता है. It's given over here.
numerical भी होता है because it is statistical, so you're actually talking about the numbers over here. Adontian is also correct, so option is all of the above. Next one, first time binomial nomenclature was written in. This is very easy, it was written in English. Next, ICBN stands for. So we have two bodies, ICBN and ICZN, जिसमें से B and Z stands for botanical and zoological, international code for these nomenclature. So the answer is international code of biological तो नहीं है, it is botanical nomenclature. Okay, so it's option C. Next one, which of the following taxonomic ranks contain organisms most similar to the other one? Obviously, the most similarity has been observed at specific level, option B. Next one, Systema Naturae was written by, very much repeated, but as I promised, हर एक MCQ solve किया जाएगा, दो repeated, so आपको numbers में problem ना हो, so it is Linnaeus. Next one, who among the following is the father of botany? We already mentioned जिसे सबसे ज्यादा botany पे study की है. Who was that? It was Theophrastus. Okay. Next, select correctly written scientific name of mango, which was first described by Carolus Linnaeus. Firstly, they're mentioning the name of the scientist, so we have to see, we have to look for which one is the most correct. Ideally, they all have to be in italics, so that's number one. Mangifera indica, Lin, Mangifera indica, Lin, Mangifera indica. So it's option one, Mangifera indica, Lin. यहाँ पे आप देख सकते हो capital I नहीं आएगा. But yes, it has to be in italics because it is printed. Which of the following belongs to the family Muscidae? So that is housefly. Option A. Next one, in the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in descending order is correct for case of animals? Descending है plus animals की बात की है तो division word will not be present. So kingdom से ही start कर रहे हैं. Let's see. Katrina place से करें. Katrina plays यहाँ नहीं आएगा. Order आ चुका है. Katrina plays. This could be the answer. Katrina plays cricket on family ground. Space. Let's just check this. Katrina P पर से ही हमें पता चल गया that we do not have these as our answers. So the correct answer is option C. Okay. So children, these were 105 questions of True Man 2025 edition for diversity in living world. आई होप आपने ये पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, मेरे साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं. आपको ऐसे कौन से चैप्टर्स की जरूरत है आप मेंशन कीजिए कमेंट्स में, एंड वील डेफिनेटली बी डूइंग देम. थैंक यू सो मच.